अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे मुखातब आपका मेज़बान मौलाना फ़ज़लदाद, और हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव हुआ करता है, और फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में इसको रिपीट किया जाता है ताकि जो लोग इस वक्त हाज़िर नहीं हो सके या जिन्होंने इस वक्त अपनी किसी मशगूलियत के अंदर अपने आप को मशगूल रखा है या दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर टाइम जोन्स की वजह से वो इस वक्त मौजूद नहीं हो सकते, तो रिपीट किया जाता है ताकि वो भी देख सकें। दिस प्रोग्राम ऑफ आवर्स, दिस सेशन is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock, and then repeated at different intervals, so that those people who cannot be here at this time, or those people who have other commitments or who've missed it, and similarly people in different parts of the world due to time zones, they can watch it, so it's repeated. और इस प्रोग्राम में आपको पता है कि आप भी इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। इस नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम भी आपकी बात सुनेंगे और बाकी जितने हमारे सामीईन नाज़रीन हैं वो भी आपकी बात सुन सकेंगे। यू मोस्ट वेलकम टू रिंग इन एंड द नंबर इज़ ऑन द स्क्रीन. We'll hear what you've got to say, and so will the rest of the listeners and viewers. And your question or your observation does not necessarily have to be linked to the topic that we are speaking about. Anything that may be beneficial to our viewers and listeners, anything that will make us better people than we are, anything that you feel that is important and could be shared with the rest of us, you're most welcome to ring in and take part in this program, inshallah. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात का निज़ाम चला रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म के मुताबिक जो अपना प्लान बनाया हुआ है इस कायनात के लिए, दुनिया तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है इस पूरी कायनात का। जिन लोगों को साइंस से वाकिफ़ियत है उनको पता है कि हमारे ये प्लैनेट्स होते हैं, फिर सोलर सिस्टम्स होती हैं, फिर गैलेक्सीज़ होती हैं, millions and millions of miles across. In fact, sometimes millions of light years across. एक लाइट की जो स्पीड है, लाइट की स्पीड 186,000 माइल्स पर सेकंड, और वो जो साल के अंदर तय करती है लाइट, तो उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो बाज़ गैलेक्सीज़ thousands of years of light years. तो कायनात, the universe is vast. Nobody has the true
estimate of how big the universe is, even with the latest technology and with the greatest minds and with the latest research. कायनात कितनी बड़ी है अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात का प्लान बनाया हुआ है, जब तक वो चाहे वो चलती रहेगी, जब वो चाहे उसको ख़त्म कर दे। और उस पूरी कायनात के अंदर ये दुनिया जो छोटी सी, तो इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को, हैवानात को, जिन्नात को, परिंदों को, दरिंदों को रखा हुआ है। On this small little earth compared to the vast universe of trillions of miles across, in fact trillions of and billions of light years across, and nobody has yet been able to fathom the universe. And this, so Allah subhanahu wa ta'ala has his grand master plan for the whole of the universe. And in that universe, this tiny little earth compared to the whole universe, of course. And on this earth, Allah subhanahu wa ta'ala has placed the humans, the jinnat, the animals, birds, the fish, and then all those that are non-living, the rocks and the land and the sea, etc., and the mountains. Allah subhanahu wa ta'ala has a grand master plan for this earth as well. इस दुनिया के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना एक नक्शा रखा हुआ है और उस नक्शे के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चल रहे हैं। अब आए हमारी तरफ, तो इस पूरी कायनात की तरफ जब हम देखते हैं और उस पूरे कायनात के नक्शे में से दुनिया जो बहुत ही छोटी सी है और उसकी हकीकत कुछ अल्लाह की यहाँ इतनी नहीं है, हकीकत जो है तो वो इस इंसान की है, उस ईमान की है, जिन्नात की है, उनके ईमान की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के लिए भी एक अपना एक नक्शा, एक प्लान रखा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ हिज ओन प्लान फॉर दिस दुनिया एज़ वेल। और दुनिया के अंदर जैसे कुरान करीम के अंदर हमें कहा गया है, बतलाया गया कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। Whatever happens on this dunya, our belief as a Muslim is that it happens because that's exactly how Allah subhanahu wa ta'ala wanted it to happen. इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतें हैं। Allah has his own wisdoms, the way he is running this whole world, the whole universe, everything. Hikmah, wisdoms, his intelligence behind it. And we as human beings do not understand even 1%, in fact even an atom of the hikmah and the wisdoms of Allah subhanahu wa ta'ala, because there's so much. इतनी ज़्यादा हिकमतें हैं। अब आए हालात हाज़रा की तरफ। Now to come with this little brief introduction, ये जो तमहीद मैंने बांधी है, उसके बाद कि आजकल आपको पता है कि फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ है, दो चीज़ें अलग हैं. There's two different things when you look at technical terms. One is the exchange of hostages on both sides, and I say hostages because some people say Palestinian prisoners. I feel those people, and everyone has their own opinion, those Palestinians who've been taken, and many of them, like Al Jazeera has mentioned, are over there in detention without any charge. So in effect, you've been taken from your house or your place or your shop or wherever it is, and everyone's entitled to their opinion, and they've been taken and they've been placed in these prisons behind bars, and according to the reports of these media organizations, they've been treated very badly. So on the one hand, you have those people who, although they are classed by some media organizations as prisoners, they are also hostages.
And then you have the hostages from the Israeli side, the Israeli people who've been taken hostage by Hamas or Palestinians, whichever way you want to say it. So there's two things here. One is the media keeps saying hostage release, hostage exchange. So in political terms, you have a hostage exchange or you have a hostage release. And then on the other side, there's something called a ceasefire agreement. And very less people keep repeating the word ceasefire, and the media, and they are focusing more on the hostage crisis, which is severe, which we all heard, and nobody believes anybody should be taken as a hostage. Taking anybody as a hostage, everybody believes it's not good, and we want those situations to be solved. And like I was reading Al Jazeera today, and it mentioned that almost 10,400 almost 10,400 Palestinians are in the Israeli prisons. And that's what Al Jazeera says, and I'm sure many other, and I give you references so that nobody can ask me personally. I refer you to those. So if there's 10,400 of the Palestinians in those prisons, and there's been 250 hostages taken from one side. So one thing is the exchange of hostages. And the second thing is the ceasefire in itself. And the ceasefire, we all welcome it, from whether it's from the Israeli side or whether it's from the Palestinian side. Both sides, we hope there's no more casualties, and we hope the ceasefire, it stays, it's sustained, it's retained, it stays as it is, and we hope that peace entails and peace is consistent, and we hope there's nobody in the middle who's going to come and spoil it, and both communities can live side by side with each other. There's a delayed response. So, and we hope that both of them, the Israelis in their countries and the Palestinians in their countries, they both of them live in peace in their own countries, and there's no conflict between them. A Palestinian state, according to UN and all these, most of the countries of the world have recognized that Palestinians should have their own state, and Israel, they can have their own state, two-state solution. Having said that, the one thing I have noticed, and I've noticed it quite well, is the Israeli hostages that have been brought back. Until today we hear there was only 3 or 4 of them. There's so much coverage on that. Yet compared to them, the Palestinians, many of them, other than Al Jazeera, I have not seen any major organization mentioning the names of those 90 Palestinian hostages or prisoners, whichever words you want to use, that have been released. Why the disparage? Why the difference between them? I don't know. I'm asking a question. Maybe somebody could ring in. Maybe somebody could tell me. I want to understand that as human beings, this person's a human being, that's a human being. Take it out for a moment that one's a Palestinian and one's an Israeli, or one's a Muslim and one's a Jewish person, or one is, I don't know, a darker color and one is of a lighter complexion. Let's take those things out of them, because that's not where we are supposed to be dabbling. As Muslims, as human beings, we think that both of them are human beings. These were innocent who were taken from Israel, and previous to that, these Palestinians, most of them were innocent. They were taken from their land, from their houses, from their shops, wherever they were from. Maybe their media organizations after the raids. So these were innocent, and they were taken, and they've been placed
in very, very severe conditions, and those Israeli hostages were taken, and only time will tell how they've been treated. But my question is this: why is it that we do not look at both of them as human beings? Why is it that some people have to be given more higher ranking, more respect, more coverage, to such an extent some of the major organizations, media ones, and they are well known around the world, I don't want to name any specific ones, they've been researching the background of each individual, their family circumstances, what their jobs are, what they've been doing, how they've been brought up, the whole the whole of their, or should I say, as their biography, summary of their biographies, and giving it on the media again and again, and those pictures of them being released. Yet the Palestinians, the 90 that have been released, as the news reports tell us, I've only seen maybe one or two that have discussed the names, Al Jazeera being one that has mentioned them all. But other than that, there may be some. Maybe you can bring it to my attention. But I want to ask, how many of you have seen the Palestinians, their background? And I understand that sometimes a media organization might be hostile towards Palestine, although it shouldn't be the case. As a media, as a journalist, you should be unbiased, balanced, without prejudice, and that's how you report. Your reporting should not be lousy, should not be lazy, it should not be biased. There should be no prejudice or discrimination or racial occurrences in there. It should be balanced, and that's why, if you notice, I mentioned both the Israeli and the Palestinian people. Both of them deserve to be the same. Both of them deserve the respect. Both hostages that were taken should be returned as soon as possible in a nice, polite, respectful way, etc. But why is it that, although I understand, like I was saying, certain media organizations, they will be hostile towards the Palestinians, the Palestinian people, they may be racist towards them, and they don't want to cover it. But what about all the other ones who claim that they are unbiased, who claim that they do not have any prejudice, who claim that without fear we will give the true reporting? Why is it that they are not given the names and the details of all these Palestinians? क्या वजह है कि 90 पैलेस्टीनियंस उनको रिलीज़ किया गया, लेकिन उनके बारे में अल जज़ीरा के अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आया कि जिसने 90 के पूरी तफसील बतलाई हो। हालांकि ये जो इजराइली 3 हैं, इनकी बड़ी तफसील से आप जा सकते हैं। मैं भी कहने, I was just about to mention 1 or 2 organizations, but I won't. We have to be professional. But I want you to go and scour the internet, and you will see, आप देखेंगे कि वो जो 3 Israeli, out of their respect, they give a whole interview about them, उनके पूरे background, उन आया वो टीचर हैं या केयर वर्कर हैं या किधर के हैं, वो पूरी तफसील बतलाई है। लेकिन क्या वजह कि वो जो फ़लस्तीन के जो प्रिजनर्स रिलीज़ किए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा? एक सवाल है, और इसके बारे में it's important we think about these things and we talk about these things so that these things are brought to the table. इन चीज़ों के बारे में हमें बात करना ज़रूरी है, और इनके बारे में जर्नलिस्ट को बतलाना चाहिए कि हम इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। ऐसे करते हैं, कुछ कॉल्स आई हुई हैं, there's some calls and we'll take a call or two, और फिर वापस आएंगे इस मौजू की तरफ। And if you want to call as well, अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, उस नंबर के ज़रिए आप डायल कर सकते हैं। हम भी आपकी बात सुनेंगे और बाकी जो सामीन नाज़रीन हैं वो भी आपकी बात सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, आप ऑन एयर हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक जो फ़लस्तीनी बच्चा था, जब उसने कहा था कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला से जाके सवाल करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि उसकी बच्चे की दुआ में कितनी मतलब शिद्दत थी, और वो एक वायरल भी हुई वो एक। और मतलब कि हमें हैसियत मुसलमान ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ अमेरिका ही जो है वो पावर डिलीवर कर सकता है और पावर ले सकता है। हैसियत मुसलमान हमें पूरी इस चीज़ के ऊपर तवक्कुल होना चाहिए कि सारी स्ट्रेंथ, सारी पावर, एब्सोल्यूट पावर जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में, जिसने ये कायनात बनाई है। सही। तो हमें जो बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बड़ी इमारतें देखने में आती हैं, लेकिन जो असल खलीफा जो मुसलमानों का बनना चाहिए उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। और वो एक इंच भी अपनी पावर से ऐसी जो मिडिल ईस्ट में जो पावर्स हैं वो अपनी एक इंच से भी अपनी अथॉरिटी को पीछे नहीं करना चाहती। और वो जो हकीकी जो लोगों की पावर है उसको ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमें फेस इस वक्त करना पड़ता है वो क्या इसका नाम है, यूएई और सऊदी अरब की गवर्नमेंट। और जब वही लोग जैसे मोर्सी की हुकूमत या जो लोगों की असल लोगों की हुकूमतें हैं उनको वो ख़त्म करके, तो वो कहते हैं कि सारी पावर हमारे पास रहे। अब बशार अल असद जो ड्रग की सिस्टर फैक्ट्रियाँ जिनकी सिस्टर मैं इस तरह करूँगा, अभी ब्रेक ब्रेक का वक्त आ रहा है, तो ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अगर आप अपनी बात पूरा करना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम। लेकिन फ़िलहाल चूँकि ब्रेक का टाइम है और ये मुकर्रर होता है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, तो इसलिए ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपकी बात सुनेंगे। फ़िलहाल ब्रेक की तरफ।